हेलो देर, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट थायराइड ग्लैंड। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लासेस, वी गॉट टू रियलाइज कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में हुआ करते थे तो हमारी जो बॉडी थी उसमें 3 जर्मिनल लेयर होते थे। जो सबसे बाहर की तरफ होता था उसको हम बोलते थे एक्टोडर्मिस, जो बीच में होता था वो मीजोडर्मिस हुआ करता था, और जो जो सबसे सबसे अंदर की तरफ होता था उसको हम लोग कहा करते थे एंडोडर्मिस। तो ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है स्टूडेंट्स, इट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम दिस endodermis, so I can say that it has a endodermal origin. Now usually when you are talking about thyroid gland तो वो होती है एक सिंगल ग्लैंड और इसके 2 lobes होते हैं। तो you can find there is a right and the left lobe, and both of these lobes are joined together by this structure that is called as isthmus। ठीक है, isthmus जो है वो इन दोनों के बीच में जो ज्वाइनिंग होती है उसे कहा जाता है। Also, of all the endocrine glands that we have, this thyroid gland happens to be the largest. Approximately it weighs somewhere close to 35 grams. Okay, it weighs somewhat close to 35 grams. Now, what you see here is a typical representation of how the thyroid gland would be able to produce its hormone. Now, this particular region is your hypothalamus. Hypothalamus contains a group of specialized neurosecretory cells which are called as nuclei. The nuclei releases something called as TRH. Yeah, and TRH is basically thyrotropin releasing hormone. When this TRH acts on our pituitary, in particularly the pars distalis part, that is the interior part of pituitary, the adenohypophysis, in fact, the pars distalis produces this thing that is called as TSH. It produces a releasing hormone, a hormone that would act on the thyroid gland and cause it to secrete its hormones or produce its hormone. So this TSH is thyroid stimulating hormone. It acts on the thyroid gland and compels the thyroid gland to produce these 3 hormones: the calcitonin, thyroxine. It is also at times referred to as tetraiodothyronine. Now, since it has got 3 iodine in the structure, it has got 4 iodine in the structure. You can see in this particular part 1, 2, 3 and 4. It has got 4 iodine, so you are gonna call this thing as T4. On the other hand, triiodothyronine जो होगा, क्योंकि उसके अंदर 3 कार्बन है, you can call it as T3. Okay, calcitonin on the other hand is a hormone which doesn't have iodine. It doesn't show iodine in its composition. So this becomes important. This becomes important because the thyroid gland, the hormones of the thyroid contain iodine in their structure. Apart from the calcitonin, calcitonin is called as thyrocalcitonin. Now, if you can work on its name, अगर आप इसके नाम के साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हैं तो आप समझ पाओगे कि ये कहीं ना कहीं कैल्शियम के साथ में एसोसिएटेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप समझने का प्रयास करिए कि ये प्रोटीन है नेचर में। इट इज प्रोटीन इन नेचर एंड इट लैक्स आयोडीन, सो आई कैन राइट इट इज नॉन आयोडिनाइज्ड। इट इज नॉन आयोडिनाइज्ड, या ओके। नाउ thyrocalcitonin is produced by this cells called as C cells, or we can call it as parafollicular cells. I will let you know, मैं आपको बताऊंगा ये पैराफॉलिकुलर सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स जिनका मैं डिस्कशन करूंगा अभी आने वाले स्लाइड्स में, तो विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग, राइट। तो हमारे पास पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है जो इस थायरोकैल्सिटोनिन को बनाती हैं। थायरोकैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन दैट इज hypocalcemic in nature. It is hypocalcemic in nature. Now again if you can work out on the name, hypo means it'll lower down what the levels of calcium, and it will level down the level of calcium in your blood. Now, since the level of calcium is decreasing in the blood, we can refer to this action of thyrocalcitonin as hypocalcemic. Okay, now similar to this, there is a hormone called as PTH. There is a hormone called as PTH, or I can write it as parathyroid hormone. Alright, so I've got 2 hormones, man. I've got this thyrocalcitonin and I've got the PTH. Both are working in a different direction. Both of them have a different purpose. Both of them have a different role. The
Thyrocalcitonin happen to be a hypocalcemic factor or hypocalcemic hormone, and in case of PTH it goes as hypercalcemic. Now in that case, I can have an understanding, man. Calcemic, it'll work on the level of calcium, right? It'll work on the level of calcium. And what is it gonna do? It's hyper, man. It'll increase the level. It will increase the level, right? वो क्या करेगा? कैल्शियम के लेवल को आपके ब्लड के अंदर बढ़ा देगा. तो both of this, the TCT and the I mean this thing calcitonin को TCT के नाम से भी हम संबोधित कर सकते हैं. तो I can say that this PTH and TCT because they have I mean opposite roles. मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? Antagonist. They are the antagonist of one another. All right. Now let us try to understand the structure of these lobes, right? The structure of these lobes. So inside the lobes you'll be finding such follicles. You'll be finding such follicles. They are enveloped by these cells. They are enveloped by these cells called as follicular cells. And this follicular cells would club together. They would come together and form a boundary over these blue colored particles what you see inside in the core of this follicle. They are called as colloids. So what these follicular cells do is they produce this hormone T3 and they produce this hormone T4. T3 is triiodothyronine, T4 is tetraiodothyronine. Both of them are produced and they are synthesized and secreted into this colloid where they remain as it is, and as and when needed they would be released into the blood. Now since it is an endocrine gland, it won't be having any duct on it. Okay, now in the neighboring or the vicinity of these follicles you'll be finding there are small cells called as parafollicular cells. These parafollicular cells would give rise to the hormone that was your TCT. Alright, that is thyrocalcitonin. Now if we can go into the structure and in fact we can have a discussion on the thyroxine, that is tetraiodothyronine or T4. Now the tetraiodothyronine or T4 or thyroxine is produced by your thyroid follicles, and in the thyroid follicles too the follicular cells. T3, as I told you in the last slide, T3 and T4, both of them are stored in colloids. They are stored in the colloids. Just give me a minute. Yeah, that's wrong. Yeah, they are stored in the colloids. That is in the core of the follicles. Now, what we can do and understand is that this thyroxine can have an impact on the regulation of the BMR. BMR is basically the basal metabolic rate. It can have an impact on our heartbeat. बेसिकली हमारी हार्ट बीट बढ़ा देगा ये. और दूसरा ये क्या कर सकता है, इट कैन ऑल्सो हैव अ, बिकॉज माई हार्ट बीट वुड इंक्रीज, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच विल बी pumped across the body would increase. I would need greater amount of oxygen, and for that I would have a increased breathing rate. So what this thyroxine can do is it can have an impact on my heartbeat, and it can have an impact on my breathing rate, ultimately affecting my BMR. Apart from that, it can also cause the demineralization of bones if you are an adult. So there are two sort of bone cells. I have got this thing called as osteoclast, and I've got another chunk of cells called as osteoblast. Now osteoblasts are basically the bone forming cells. On contrary to them, I have this osteoclasts which are bone eating cells, or I can say they are bone degrading cells. So what the thyroxine will do is it'll cause the action of the osteoblast. It'll compel them to work, and I'll find my bones get degraded. They would be causing the demineralization. The calcium would be dumped into the blood, right, and then cause the weakening of my bone. Thyroxine happens to be a hyperglycemic. Glycemic. Emic, wherever you find emic, it basically refers to blood. Okay, and gly is particularly used for glucose, that is sugar, and hyper means excess. So I could have under the influence of the thyroxine, or by the action of the thyroxine, I could have a condition whereby I'll have increased blood glucose. I would have an increased level of glucose in my blood. So there are two factors that are responsible for it. First is
glycogenolysis. For somebody like me who is an animal, in fact all of us who happen to be animal, we are social animals, right? So we have got I've got this stored material in my body, that's glycogen. Glycogen is acted upon by certain stuff and it gets converted into glucose. It happens mostly in case where your body is deprived of nutrient for due to deprived of food. तो ग्लाइकोजन जो था वो अपने आप को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता था और उसके लिए चाहिए होते थे हमें ग्लूकागॉन, जो कि का पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स के द्वारा बनाए जाते थे. तो ग्लूकोज बन रहा है आपके बॉडी में एक्स्ट्रा, ठीक है, एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ द ग्लाइकोजन विच इज अगेन अ कार्बोहाइड्रेट. तो आपने देखा एक कार्बोहाइड्रेट से दूसरा कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था. कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं एक नया किस्म का फिनोमेना जिसे कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस. ना ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जब भी ग्लूकोज is produced from source different than carbohydrate. That means अगर ग्लूकोज जो है किसी प्रोटीन में से बनता या फिर किसी लिपिड में से बनता, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को we could have referred to as gluconeogenesis. Alright, and in both of the cases we are finding that the glucose is increasing in the blood, which is ultimately a condition called as hyperglycemic. Now thyroxine can have lipolytic action. It can have lipolytic action. When I say lipolytic, it would cause the breakdown of the lipid in my body, and thereby if the lipids of my body are lost, I am also losing weight. So thyroxine can be used as it can be used as weight reducing measure. Okay, it could be used as a weight reducing measure. Highly not recommendable, in fact. Okay. Now thyroxine happens to be a catabolic hormone. What it will do is it will increase the heat production of the body, and heat production and energy production too, and it is therefore at times also referred to as the pace setter of the body. It is at times referred to as the pace setter of body. Okay, so we actually had a discussion on the thyroxine, and there'll be amazing fact sort of stuff. Thyroxine or tetraiodothyronine causes metamorphosis in frog. It causes metamorphosis of frog. So you see there is a tadpole. There's a tadpole which ultimately develops into an adult frog, and that's metamorphosis, and it is induced by thyroxine, that is T4. All right. Now there are certain disorders associated with the tetraiodothyronine. In one of the case, when the amount of tetraiodothyronine or T4 or thyroxine is less, we refer to such secretion as hyposecretion, because the amount of secretion is lowered. Hypersecretion is basically a state when the amount of secretion of the hormone increases significantly. Alright, with hyposecretion there are two conditions associated: cretinism and myxoedema. So let us first talk about the cretinism. It is basically seen in the children, while on the other hand the myxoedema is basically found in observed in case of the adults. It is found in the adults. So if you are talking about cretinism, it can basically affect your physical growth. Apart from that, since it is impacting your आपका जो physical growth है उस पर असर पड़ रहा है, तो आपका जो मानसिक संतुलन होगा उस पर भी इसका असर देखने मिलेगा. It will have an impact on both the mental as well as the physical growth. At times we also find it can have impact on the sexual growth. It'll be found that the individual suffering from cretinism will not have a very well developed reproductive structures. Okay, now these guys which has, who has this cretinism are basically dwarf. These kids are dwarf and sterile. These guys would be referred to as cretins, right? They would be referred to as cretins. So any individual who suffers from cretinism is going to show you physical growth, mental growth and sexual growth, and that growth would be like अच्छा वाला के खराब वाला, हाँ? It would be खराब वाला. इनफैक्ट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो नहीं पाएगा, इसकी वजह से इनकी हाइट कम रह जाएगी और ये स्टेराइल होंगे. मीन्स दे वॉन्ट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी बेबीज आउट देयर. Okay, and such individuals would be referred to as cretin. Now a individual who is referred to as cretin would show you pot belly.
Okay, they would show you pot belly. They would have pigeon chest. They would have pigeon chest, and the tongue, no, the tongue would be showing protrusion. They would have produced protruded, yeah, just give me a minute. Yeah, it will show you protruded tongue. Okay, it will give you a protruded tongue. It will be you in here, right? It will be you in here. Oh, okay, great. Now, so that's criticism. It will be found in the children, found in children. Basically, I have written here childer as children, right? I'm sorry for that. Now, myxoedema is basically found in case of the adults, and many a times, many times this disease is also called as Gall's disease. It's also called as, or also referred to as, Gall's disease. So if we are talking about the Gall's disease, and if you are trying to understand कि myxoedema में क्या होता है, तो ये बेसिकली थायरोक्सिन के हाइपो सिक्रीशन की वजह से वो हमको पता चल गया. नाउ अगर किसी व्यक्ति को मिक्सोडीमा हुआ है तो इसके अंदर जो फैट था हमने देखा था कि इसका जो एक्शन है वो क्या था. वो प्रोटीन से ग्लूकोज बना सकता था, लिपिड से ग्लूकोज बना सकता था, कई बार वो लिपिड को ब्रेक डाउन कर दिया करता था. तो हम क्या देखते हैं, ऐसे व्यक्ति जिसको मिक्सोएडिमा हुआ है उसके अंदर लिपिड और प्रोटीन का जो लिपिड एंड प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म होता है वो रिड्यूस हो जाता है. लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो होगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो इनके अंदर प्रोटीन और फैट्स की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी. ठीक है, किसके नीचे, स्किन के नीचे. एंड बिकॉज ऑफ दिस द स्किन अपीयर्स फ्लफी. स्किन अपीयर्स फ्लफी. तो अगर स्किन अपीयर कर रही है फ्लफी जैसी, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रोटीन्स और फैट्स बहुत ज्यादा मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो स्किन के नीचे डिपॉजिट होते जा रहे थे. ओके, नाउ ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको. फिर समझने वाला क्या था, अब क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स और प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो इस व्यक्ति के अंदर एनर्जी कम होगी. इट विल द पर्सन वुड शो यू लेस एनर्जी एंड वॉन्ट बी एबल टू कैरी आउट लाइक रेगुलर डे टू डे लाइफ फंक्शंस. एंड अ पर्सन वुड ऑलवेज बी फीलिंग लेथार्जिक, है ना, काम करने का उसको मन ही नहीं करेगा. और he'll become more sensitive to cold. He'll show excessive sensitiveness to cold, and many a time this sensitivity to cold is developed because of the less heat production. हमने यहाँ पर देखा था लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था थायरोक्सिन हार्मोन का, कि वो कैटाबॉलिक होता है, तो वो हीट और जो एनर्जी थी दोनों को ही प्रोड्यूस करने में मदद करता था. बट अब क्या हो रहा है, हम देखते हैं मिक्सोएडिमा के अंदर वो लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन बहुत अच्छे से इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं. राइट, सो दैट इज मिक्सोएडिमा. नाउ लेट्स कम टू हाइपर सेक्रीशन. जब बहुत ज़्यादा थायरोनिन बनेगा तो उससे क्या नुकसान हो सकता है. इन दैट केस विल फाइंड इट विल कॉज इंक्रीज्ड BMR. ओके, BMR जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा. अब अगर इंक्रीज BMR हो गया तो आपको रेस्टलेसनेस होगा. you'll be under the influence of, you'll be under the effect of restlessness. Your body would become excessively lean and thin. Your body would become excessively lean and thin. और ऐसे कंडीशन को कहा जाएगा क्या, emaciation. इसे कहा जाएगा emaciation. The process would be called, the effect would be called as emaciation. And many a times in medical terminology, this state is called as it's called as thyrotoxicosis. It is called as thyrotoxicosis. Okay, or many a times it's also referred to as Graves disease. ये आपने शायद आपके जो एग्जाम्स वगैरह होंगे उसके पेपर में देखा होगा, Graves disease. ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप किसी व्यक्ति के, जैसे से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लुकिंग इनटू द, इफ अगर आप इस व्यक्ति को सामने से देख रहे हो और ये अगर इसका फेशियल अपीयरेंस था, तो इसकी जो आंखें होंगी वो बल्जिंग आउट करेंगी. The eyes of the person would be actually bulging out, and it's for that reason many a times this is also referred to as exophthalmic goiter. It's also referred to as exophthalmic goiter. All right, तो ये जो हमने बात करी है थायरोक्सिन हार्मोन के रिस्पेक्ट में बात करी. अब आगे बढ़ते हैं and let us have a discussion about the triiodothyronine or T3 hormone. Now of all these hormones that are produced by the thyroid gland, सबसे कम मात्रा में जो हार्मोन बनाया जाता है वो T3 होता है. कितना होता है ये? It is somewhere close to 2%. It is somewhere close to 2%. That's very less. ठीक है, और मोस्टली ये जो बनाया जाता है, T3 बनता है, ये बनता है बाय deionization
डीआयोडीनेशन ऑफ T4, मतलब T4 जब डिग्रेड होता था उसके जो आयोडीन थे उसको यूटिलाइज करके हम लोग T3 बना दिया करते थे ना। ये बेसिकली फीडबैक रेगुलेटर है TSH का, मतलब TSH को क्या करवाएगा, ये रुकवा देगा। जब बहुत ज़्यादा TSH होगा तो हमारे पास T3 और T4 ज़्यादा बनेंगे, तो जब T3 की मात्रा बढ़ जाती थी वो TSH के ऊपर एक्ट करता था और उसका एक्शन को वो इनहिबिट किया करता था। दूसरी बात क्या है कि इसकी लाइफ स्पान जो है कंपेरेटिवली छोटी होती है, और ये क्या करता है, ये हमारे T4 के साथ मिल करके हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, गर्म करने का काम करता है वो। अब क्योंकि ये हमारी बॉडी की हीट को कंट्रोल कर रहा था, हम इसको थर्मोस्टैट के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोस्टैट ऑफ बॉडी। एंड स्टूडेंट्स, दिस बिकम्स a very important point. Okay, so please, if you're writing it down with me, please make a note of it. Okay, all right, now going to the goiter. This is a simple goiter. जब होता क्या था, ना तो सिक्रीशन ना तो सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आयोडीन, आपके थायरोक्सिन का, ना तो बहुत कम हो रहा है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द सिक्रीशन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, बट इट इज एसोसिएटेड with the deficiency of iodine. It is associated with the deficiency of iodine. It's associated with the deficiency of iodine in our food. Now the people who are living in the hilly region find this as their endemic disease. They find them as the endemic disease. And in the coming videos we'll also have an understanding why it is endemic in the hilly region. Now see, because of the lowered amount of the iodine in the body, होगा ये क्या कि हम देखेंगे जो थायराइड फॉलिकल्स थे, ठीक है, जो फॉलिकल्स थे, या फिर जो हमारी जो ग्लैंड थी, थायराइड ग्लैंड, या तो फॉलिकल्स या तो ग्लैंड, दो में से किसी एक की साइज क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। दोनों में से किसी एक की या फिर दोनों की साइज जो थी वो बढ़ जाया करती थी। तो हमारे जो पीछे हमने देखा, ये हमारे फॉलिकल्स थे, यहाँ पे हमारे फॉलिकल्स हैं ये पूरे, ठीक है, ये फॉलिकल्स हैं। और ये जो मैं बना देता हूँ, अगर मैं बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर थोड़ा सा कुछ बना दूँ कुछ इस प्रकार का, तो ये हमारा क्या पूरा थायराइड ग्लैंड हो गया, ये हमारा पूरा थायराइड ग्लैंड हो गया। तो ये थायराइड ग्लैंड पूरा का पूरा बढ़ सकता था, ये फॉलिकल की साइज बढ़ सकती थी। अब क्योंकि ये गले में होता था तो हम देखते थे इसके वजह से हमारे गला जो था थोड़ा सा फूल जाया करता था, और ऐसी कंडीशन को कहा जाता है गॉइटर, ठीक है। तो मान लो किसी व्यक्ति को गॉइटर हुआ है और वो चाहता है कि ठीक हो जाए, या फिर कोई व्यक्ति जिसको आयोडीन सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो वो क्या करेगा, he would try to have in abundance the seafood. He can also opt out for this onion, जिसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आयोडीन होते हैं, ठीक है। आजकल तो हमने क्या कर दिया, हमने बोला इतना सब बाहर का खाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग जो नमक खाते हैं इट इज़ आयोडिनाइज्ड नमक, इट इज़ आयोडाइज्ड नमक इन फैक्ट, ठीक है। तो in the today's class what we have done is we have had an understanding of the thyroid gland, whereby we studied how do the thyroid glands produces different hormones. We had an understanding of calcitonin, then we looked into the different type of cells, we talked about thyroxine, we also had a discussion on the disorders of the thyroxine hormone, and then we talked about the triiodothyronine. So that is in this video guys. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। if that is the case, आप लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि चैनल फ्यूचर में आपके लिए यूज़फुल होने वाला है तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड या गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस।